हेलो पिला मने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। सो आज आम डिस्कसन करवा आपण मानकर लर्निंग एंड टीचिंग रो यूनिट नंबर 4 टीचिंग प्रोसेस विषय रे। सो चलतु डेरी न करके आज क्लास टी जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आमर होची एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग रो माने कौन? तो आम समस्त जान टीचिंग माने कौन? शिक्षादान प्रक्रिया। तो every teacher and educationalist of experience knows that even the best curriculum and the most perfect syllabus remain dead unless quicked into life by the right method of teaching and right kind to teachers। तो ये डेफिनेशन टा किए देथिले सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन। तो या माने कौन ना जेते भी भल सिलेबस होना कहीं माने सब बेले जदि आमे गोटे पाठ पढ़ारे राइट मेथड न यूज करबा गोटे निर्दिष्ट तर प्रक्रिया नथिबो देन आमे केबे टीचिंग प्रोसेस रे सक्सेस पाई परिबा नाही। देन आसला मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग रो मीनिंग कौन? टीचिंग इज द प्रोसेस इंक्लूडिंग मोरल वैल्यूज एबिलिटीज skills by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior useful in developing oneself and the society। तो टीचिंग होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि गोटे एक्सपीरियंस लोक जहाँ पाखे कि मोराल एबिलिटीज थी स्किल थी से कौन कर गोटे इनएक्सपीरियंस पर्सन को बुझेब। गोटे शिक्षित लोक गोटे किसी न जानी लोक को शिखेब ता बिहेवियर रे चेंजेस आनिब। तो यहाँ हूँ आमर टीचिंग। Teaching is a process in which one individual teaches or instruct another individual। तो यही प्रक्रिया रे कौन हुए? गोटे इंडिविजुअल अन्य गोटे इंडिविजुअल को किसी इंस्ट्रक्ट दिए बा ताको किसी बुझाए। टीचिंग इज ए प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम सिचुएशन। तो मेनली आम जानते टीचिंग टा कोडी क्लासरूम रे ही बेसिकली चले। इट इज मोर ऑफ फॉर्मल प्रोसेस। इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस आम जाने समस्ते। देन आसला थ्रो आउट टीचिंग द टीचर्स एम्स एट। तो टीचिंग प्रक्रिया रे टीचर कर मूल लक्ष्य कौन थाए? गिविंग सम नॉलेज टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट मान को किसी नॉलेज दबा। मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर माने स्टूडेंट मानकर जो खराब गुण सब थी बिहेवियर जहाँ भी खराब थी से मॉडिफिकेशन आनिबा। चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। लर्नर रो एटीट्यूड चेंज करिबा। पॉजिटिव एटीट्यूड गोटे क्रिएट करिबा। मेकिंग द स्टूडेंट एक्वायर सम स्किल तांको इंपोर्टेंट स्किल विषय शिक्षा दबा। गिविंग सम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ रो तांको किछि एक्सपीरियंस शेयर करिबा। देन आसिला टीचिंग रो डेफिनेशन कोन हमें जानिबा। टीचिंग इज ए रिलेशनशिप व्हिच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर। तो एटा होछि गोटे रिलेशनशिप जहा कि गोटे माने स्टूडेंट रो बा गोटे चाइल्ड रो पावर को डेवलप करे। एटा को रेवन देथिले। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लर्निंग। एटा B.D. स्मिथ देथिले। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल। तो यहाँ हूँ गोटे इंटरेक्टिव प्रोसेस जोटा कि टीचर आउ स्टूडेंट मान भीतर हुए एंड ऑकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डिफिनेबल एक्टिविटी। यहाँ को देथिले एडमंड एमिडन। देन आम जाना नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आमर टीचिंग रो कौन कौन नेचर अच्छी और तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक कौन ता विषय में जाना। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। आम पिला को गाइड करवा ताको ट्रेन करवा जमती कि माने फ्यूचर रे गोटे भल मनीष हो पारे। टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे। गोटे प्रॉपर वे रे तांको कौन नॉलेज प्रोवाइड करवा। इट इज ए साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि बार्थ थ्रू माने टिल डेथ जाए चली थाए। इट एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। इट इज फॉर्मड एज वेल एज इट इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल माने जोटा कि आम स्कूल ले पढ़ुचे। इनफॉर्मल माने आउटसाइड स्कूल जोगुड़ा भी घरे आम कि सोसाइटी रे जहाँ भी शिक्षा लाभ करुचे अन्य जन ठारू सेटा होचे इनफॉर्मल टीचिंग। It is communication of information to the student. It is a tool that helps student to adjust himself in the society and its environment। ताको environment रे adjust हुआ पाई स्टूडेंट मानू को adjust करिया पाई बा adapt करिया पाई मध्य एटा help करे।
देन आम जाना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टीचिंग रो कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स अच्छे टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ए पर्पजफुल प्रोसेस हेन्स ऑब्जेक्टिव आर एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल टीचिंग सम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज तो टीचिंग रो गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अच्छे आम कौन पर शिक्षादान करवा ना हेल्पिंग द पुपिल सो दैट दे कैन अंडरस्टूड द रियलिटीज प्रॉपर्ली एंड मे एडजस्ट इन ए बेटर वे तो आम हेल्प करिया जमीक से सबू जिनस को बुझीपारे रियालीटी कौन से जापर आउ कौन निजक प्रॉपर्ली गोटे एनवायरनमेंट रे एडजस्ट करें एनाब्लिंग द पुपिल्स टू एस्टाब्लिश द कांटेक्ट विथ ट्रूथ एंड टेक डिसीजन बाय टीचिंग से आम जब उपयुक्त शिक्षादान दबा देन से लाइफ रो गोटे इंपोर्टेंट सब डिसीजन गुड़ाक नहीं पारे द टीचिंग प्रोसेस शुड मेक ए पुपिल द बेस्ट वर्कर एंड द बेस्ट थिंकर to help one or other every day so that the new experience are gained and that pupil may perform some constructive tasks तो ये थिला हमर क्वेश्चन नंबर 1 देन जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीचिंग एटा आउ गोटे क्वेश्चन से 5 मार्क रो शॉर्ट नोट आकार हे सब आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन आकार आसीबोनी शॉर्ट नोट आकार ही आसीबो सो आम पढ़ा कौन फंक्शन ऑफ टीचिंग टीचिंग रो कौन कौन फंक्शन अच्छी फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट लर्न बाय इम्पार्टिंग नॉलेज एंड सेटिंग अप ए सिचुएशन इन व्हिच द स्टूडेंट कैन एंड विल लर्न इफेक्टिवली तो टीचिंग रो मेन फंक्शन होची कौन ना पिला माननकु कौन करवा नॉलेज प्रोवाइड करिया जेमिति पिला माने कौन आमठू किछि एमती आम शिक्षादान करिया जेमिति कि सेमाने आमठू किछि भल शिक्षा पाई परिबे आउ कौन ना सेमाने इफेक्टिवली पढ़ी मध्य पारिबे द मेन फंक्शन इज डायग्नोस्टिक फंक्शन आ गोटे है कौन प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन आ गोटे हूँ इभालुएटिव फंक्शन तो यही सब फंक्शन विषय में बिट बाय बिट गोटे गोटे पढ़ी फास्ट आसला आमर डायग्नोस्टिक फंक्शन माने कौन ना गोटे पिलार जहाँ भी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रही आम चेंजेस करा पूर्वर आम कौन करवा डायग्नोसिस करा जहाँ भी खराब बिहेवियर अच्छी कि खराब गुण अच्छी पिलार गोटे डायग्नोसिस करा सेटा हूँ डायग्नोस्टिक फंक्शन बा टीचिंग प्रोसेस रे जदि किसी माने भूल रोची देन ताकू ठीक करने प्रथम आम से भूलटा को डायग्नोसिस करा So the main goal is to bring desirable changes in the behavior of the student. The initial tasks need a proper diagnosis for the prescription of appropriate treatment for bringing desirable behavioral changes in the student. Accordingly, the teacher has to perform the following diagnostic function. तो teacher कौन करती ना फास्ट करती diagnose entering behavior तांकर entering behavior को diagnose करती formulate educational objective आउ कौन करती ना एनालाइज द कंटेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन यही तीन फैक्टर ऊपर टिके बेसी फोकस करती देन आसला कौन प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन आफ्टर डायग्नोसिस कौन हुए ना तांको प्रेस्क्राइब करा जाए कि यही चेंजेस अणाजिवो On the basis of diagnosis, the teacher take decision about the needed prescription for achieving the desirable objective. Accordingly, he must perform the following function. तो teacher कौन करती selection and organization of appropriate content in appropriate sequence. तो से particular content को गोटे particular by appropriate sequence रे सजाती selection of appropriate teaching method, media and strategies, seeking desire and cooperation from the student. आउ कौन स्टूडेंट मानक पाखु कोऑपरेशन से आशा करती देन आसला इभालुएटिव फंक्शन इभालुएट माने बुझी परछंती गोटे जिनस सरला परे ताको इभालुएट करबा हमर रिजल्ट केमिति हैला इभालुएटिव फंक्शन कंसर्न विथ द टास्क ऑफ इभालुएटिंग द प्रोग्रेस एंड द आउटकम्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन आमे गोटे जिनस प्रेस्क्राइब कला परे सेतिरु केते रिजल्ट आसिला ताकू इभालुएट करिया को इभालुएटिव फंक्शन कहा जाय दैट मे बी डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द stipulated objectives. Various evaluation device in the form of test, observation, interviews, rating scale, inventories and unstructural projective techniques are help in exercising evaluative function. तो आमर various methods सब अच्छी evaluation पाई जेमति कि हमें test माध्यम रे observation माध्यम रे interviews माध्यम रे rating scale माध्यम रे पिला को जज करि परिबा some more function आउ कौन कौन function अच्छी ना motivating the child
चाइल्ड टू लर्न पिला मानकु मोटिवेट करवा टर्निंग द चाइल्ड इन ए क्रिएटिव बीइंग डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंगली गिव रिमेडल पिला मानकर कोउथरे प्रॉब्लम होछ ताको लर्निंग प्रॉब्लम कोन सेटा को हमें कोन करबा डायग्नोसिस करिया ता सहित तांको कोन करबा गोटे रिमेडल प्रपोजल दबा बा गोटे किसी जिंस प्रेस्क्राइब करिया कि एई जिंस रे तमे मॉडिफिकेशन आनिले तम रिजल्ट बेटर हे परिबो providing educational and vocational guiding counseling inculcating social and moral values evaluating recording and reporting आउ कोन मेकिंग करिकुलम मटेरियल सो एतिकी थिला तारो फंक्शन गुडाक देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हमरो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन टीचिंग एज ए प्रोफेशन टीचिंग केमिति गोटे नोबल प्रोफेशन हे परिबो से विषय में डिस्कशन करबा ता पूर्व टिके सुनंतु एई क्वेश्चन टा यूनिट 4 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु आपण मानकर 15 मार्क आसबार चांसेस अच्छी आउ कौन ना आपण मानकर 5 मार्क आसार चांसेस अच्छी तो आप डेफिनेटली यहाँ ना पढ़िकिना जिबे सो आम विषय पढ़ा टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन आम समस्ते जाचु द वर्ड प्रोफेशन इज ए सिनोनिमस टू ऑक्युपेशन जॉब कैरियर वर्क एंड लाइन ऑफ वर्क द वर्ड प्रोफेशनल मीन्स लॉन्ग एंड एरोडोस इयर्स ऑफ प्रिपरेशन ए डेडिकेशन टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट टू मोरल एथिकल वैल्यूज द कंटिन्यूड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग गोल प्रोफेशनलिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट इट इज डायनामिक एंड फ्लूइड आम समस्त जाने गोटे प्रोफेशन माने कौन गोटे कम जेकोसी कम होना कहीं बहुत लॉन्ग टाइम जाए से जिनस रहा आम गोटे डेडिकेट रहा से कम प्रति सेटा को कौन कहते प्रोफेशन कहते टीचिंग इज ए डेफिनेटली प्रोफेशन एज इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड वैल्यूज फॉर स्टूडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव सोशल रिलेशनशिप तो आम समस्त जाने टीचिंग गोटे कौन नोबल प्रोफेशन कहीं कारण ये मेनली कौन फोकस करे पिला केमी पिला भविष्य गढ़ा पिला केमी बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करवा पिला सपोर्ट करवा फ्यूचर गढ़ा तो मेन लक्ष्य हूँ या सब तो से आम समस्ते कौन कहू टीचिंग गोटे नोबल प्रोफेशन कहू देन आसला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन तो टीचिंग प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन It has long-term education and training for a job role. It should cater the need of society and nation. ये mainly focus करे society कौन चाहूँची बा गोटे nation कौन चाहूँची तार मूल लक्ष्य कौन ये सब ऊपर mainly focus करे. There should be social accountability आउ कौन society प्रति सब बड़े accountable रहे teaching profession टा आउ कौन there should be some ethical norms of consideration. There should be a professional association. There should be autonomy and self-regulation. There should be freedom to charge reasonable fee for the service. तो सेमाने कौन करि परिवे ना निज प्रोफेशन पाई गोटे रिजनेबल प्राइस भी सेमाने कौन करि परिवे चार्ज करि परिवे. देन आसला टीचर एज ए प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल कमिटमेंट केमती करथांती से विषय टिके जानिबा. टीचर शुड गिव प्रायोरिटी टू प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट. टीचर माने सब बेले निज प्रोफेशन प्रति सेतिके डेडिकेट रहबा दरकार तांको ड्यूटी को से माने ठीक भाबरे में पालन करिया दरकार. द टीचर शुड बी एंथुसियाटिक टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग से सब बेले माने इंटरेस्ट गोटे क्रिएट करि पारुथवा दरकार. टीचर शुड हैव इमोशनल टाई विथ हिज स्टूडेंट माने टीचर गोटे स्टूडेंट मान सहित इमोशनली भी अटैच होइतबा दरकार से गोटे स्टूडेंट रो माइंडसेट बुझी पारुथवा दरकार. टीचर शुड हैव पॉजिटिव आउटलुक एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रेन माने चिल्ड्रेन मान प्रति सिंपैथेटिक होइतबा दरकार. बेसी रागु नथुव चिड़चिड़ हो नथुव कथा कथरे पिला मान को बाडो नथुव नले पिला मानकर मेंटल स्टेट गोटे तांको पई ठीक रहबनी नेगेटिव माने नेगेटिव थिंकिंग बहुत आसीबो. टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट विथ रिगार्ड टू देयर एबिलिटीज capacities needs aims weakness and the level of aspiration and beliefs. तो से गोटे तार मेन गोटे टीचर मेन एम कौन रहा दरकार से गोटे पिलार वीकनेस टाक देखो केमी स्ट्रेंथ बनइब बा केमी गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे स्ट्रॉन्ग बनइब से ऊपर मेनली फोकस करिया दरकार. देन आसला प्रोफेशनल नॉर्म्स. प्रोफेशनल नॉर्म्स माने कौन द एवरेज बिहेवियर ऑफ प्रोफेशन इज नोन एज प्रोफेशनल नॉर्म्स. कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ए प्रोफेशनल और वैल्यूज टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द प्रोफेशनल रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज. तो प्रोफेशनल नॉर्म्स माने कौन जिते बड़े गोटे टीचर गोटे प्रोफेशन रुए जेकोसी प्रोफेशन होना कहीं आम से प्रोफेशन रोल मानिबा दरकार तार किसी कंडीशन जो थाए से आम सब मानिकी चलिया दरकार. Attitude, value, beliefs for the professional value. The professional norms are specific but has
field to develop. Then asila professional ethics माने कौन attitude towards the student मानक प्रति आमर कौन attitude रहा दरकार. It shall be the primary duty to understand to promote a spirit of inquiry, fellowship and joy in the student. Attitude toward the profession प्रति किपरि attitude रहा दरकार. It is the teacher primary duty to sincere and honest. सब बड़े sincere हवा दरकार, punctual हवा दरकार, टाइम रे आसुथिबे, honest हवा दरकार, मिछ कहउनथिबे. In what to go thoroughly prepared to class. आउ क्लास को जिबा पूर्व से mentally prepare हवा दरकार कि से पिला माननकु केमिति हैंडल करिवे. attitude towards the society प्रति किपरि attitude रहा दरकार ना. it is the teacher primary duty to set a example in citizenship, to endeavor to promote the public good, to be dynamic leader when required and to be ideal followers when desired. तो सब बेले से सोसाइटी को गोटे एग्जांपल दउथो केमिति तमे गोटे भलो सिटीजन हेई परिबो, केमिति माने कोन तमे देशर उन्नति करि परिबो, सब बेले समस्तक पई गोटे एग्जांपल क्रिएट करि पारुथवा दरकार. मोर नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस. टीचिंग हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. आम समस्त जाने टीचिंग रे कौन बोथ आर्ट और साइंस रो एलिमेंट रही है. कहीं ना आम पिला मानू से शिक्षा दौ जहाँकि आम गोटे रिसर्च रो रिजल्ट रू जापर. सपोज आम गोटे रिसर्च रे कि गोटे प्रोजेक्ट कले से आम जहाँ भी रिजल्ट पाइलु सेटा ही आम प्राक्टिकली पिला बुझाऊ. आउ जहाँ भी आम मेथड टीचिंग प्रोसेस रे यूज करूँ प्रॉपर्ली कौन करूँ सुपरवाइज करूँ तो सहित एनालाइज करूँ जोटा कि कौन ओवरऑल कह गले साइंस रो गोटे मेथड सेटा होता है. तो यहाँ कौन गोटे साइंस आर्ट रो पार्ट. So the art of teaching lies within the application of knowledge gained from research taking place in the context of unique situational nature of the classroom. The teaching is considered as science on the basis that all the activities of teaching can be supervised and analyzed. जोटा कि मुझे कही गली आम जहाँ भी एक्टिविटीज जहाँ भी मेथड यूज करूँ ताको प्रॉपर्ली सुपरवाइज करूँ एनालाइज करूँ से एटा गोटे साइंस रो पार्ट बोलिक आम कनसीडर करूँ. देन आसला टीचिंग एज एन आर्ट जोटा कि रिफ्लेक्टिव होता है कौन होता है इन्वेंटिव होता है. देन फास्ट आम पढ़ा आर्ट कौन. टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ एजुकेटर. द आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स एडेप्टेशन एंड ए टीचर मस्ट मेक टू एकोमोडेट हिज और हर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड स्टाइल. द आर्ट कम्स फ्रॉम द टीचर पर्सनालिटी एक्सपीरियंस एंड टैलेंट्स. तो जो आम कहे टीचिंगटा गोटे आर्ट कहीं कारण गोटे सब टीचर मान अलग अलग स्टाइल थाए समस्त पढ़ाया स्टाइल सेम ही न थाए. तो यहाँ कौन एक्सपीरियंस आउ टैलेंट उपरे निर्भर करे. The teaching is considered to be an art because it involves following skill like to dissimulate language, to maintain interest, to attain the attention of the learner. सब माने टीचर माने अलग अलग परफॉर्म करती. कौ टीचर बहुत भल होता पिला बहुत मजा मजा कथा कहीकि इंटरेस्टिंग इमेज देखे कि सब पिक्चराइजेशन करी सब बुझाती. आउ कौ टीचर आसिले बस गाई देकी पड़े गले. To decide handling the problems of the learners, to modify the learners behavior. तो समस्तंकर कौन होता है समस्तंकर स्टाइलटा टीचिंग स्टाइलटा अलग होता है. Then asila teaching as a science. Teaching is a science in which there are many strategies and practices. Just like doctors, teachers should use research to inform their practice. Teaching follow research based on practice to promote student achievement. टीचिंगटा सब बड़े कौन करे रिसर्च उपरे मेनली फोकस करे. The science of teaching involves the generalization from the research about effective learning. तो गोटे रिसर्च करला परे गोटे जनरल नॉलेज आसी जाई कि आमे कौन पिला मन को पढ़ेबा आर कंक्लूजन कौन हबो. तो ओवरऑल कह गले कौन ये गोटे जनरलाइजेशन क्रिएट करे. The science come from knowledge of child development and the structure of the curriculum. In this teaching learning process, the use of reinforcement and feedback can prove effective. Hence, the teaching is being recognized as a science. Teaching is an applied science because it incorporates
सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच तो पर्टिकुलर सिस्टम गोटे पर्टिकुलर सिस्टम आउ मेथोडोलॉजी यूज करा जाए टीचिंग प्रोसेस रे सेतपई एटा गोटे साइंस सहित कंपेयर करा जाए द सिस्टम एंड द मेथड द एक्सपेरिमेंटेशन एंड द ट्रायल the problems and answering, hence we can say that teaching is definitely a science. Art and science both play an important role on each other because if a teacher only demonstrate one of these type of teaching, their classroom will most likely to very boring. तो से कौन कहला जदि केवल गोटे टीचिंग प्रोफेशनटा ओनली जदि साइंस उपरे माने कौन बेसी फोकस करिवो देन माने क्लासरूमटा सेतिकी एन्जॉयिंग हेई परिबनी साइंस सहित आर्ट उपरे मध्य डिपेंड करिया दरकार ताहले जाइकी क्लासरूमटा कौन गोटे इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करि परिबो ए गुड टीचर कैन बैलेंस बोथ आर्ट एंड साइंस इन देयर क्लासरूम देन आसिला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन तो टीचिंग रो कौन कौन फेज सब थाए से विषय में पढ़िबा टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड tasks and for completing this tasks proper management and strategy is important समस्ते भावती कौन टीचिंग टा गोटे बहुत इजी प्रक्रिया जी सी पढ़े पार किंतु एटा एक्चुअली सत नुह समस्ते पढ़े पारे सत कि समस्ते पिला मानकु ठीक से बुझे पारे तो आमको पढ़ाई गोटे प्रॉपर मैनेजमेंट सहित कौन गोटे आम स्ट्राटेजी गोटे प्लानिंग रही दरकार ताहले जाइए आम गोटे पिला को भलसे बुझे पारिबा टीचिंग हैज टू बी डन इन स्टेप्स द डिफरेंट स्टेप constituting the process are called the phases of teaching तो टीचिंग कौन बहुत सारा स्टेप हुए तो से डिफरेंट स्टेप गुड़ा को कौन कहुए फेजेस ऑफ टीचिंग बोली कहुए द टीचिंग फेजेस आर एज फॉलोज तो टीचिंग फेजेस कौन कौन थाए ना मेनली 3 टाइप्स रो थाए प्लानिंग आ गोटे होची एग्जीक्यूशन आ गोटे होची रिफ्लेक्शन फर्स्ट आसिला प्लानिंग प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इन दिस स्टेज द टीचिंग प्लानिंग इज परफॉर्म दिस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज दैट आर नीडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस तो गोटे माने टीचर कौन करती पढ़ा पूर्व प्लान कर दियंती कि मुझे क्लास रे कौन पढ़ी ता विषय टिके मोर माने पिला मानकु बेसिक नॉलेज फर्स्ट कहीदेवे तो एगुड़ा होची प्लानिंग रे जीवो Hence, the following activities are included in the pre-active phase of learning. First, होची fixation of goal. माने गोटे टॉपिक रो बा गोटे कॉन्सेप्ट रो मेन गोल कोन सेठा को फिक्स करा जाए. Decision making about the subject matter. Arranging, sequencing the element of content for representation. Decision about the strategies of teaching. I would say कोन distribution of teaching strategies. Then asila execution, interactive phase. This phase is also called interactive phase because what is planned in pre-active phase is executed in this phase. जहाँ भी टीचर प्लान करी थांती सेटा एई फेज रे ही से कोन करंती पिला मानन को रिप्रेजेंट करंती. In this phase the teacher interact with student. एई फेज रे कोन करंती से पिला मानन को सहित इंटरेक्ट करंती किंतु जो प्लानिंग फेज रे से केवल प्लानिंग बने के रखि थांती कि मु पिला मानन को कोन पढ़ेबी को मेथड यूज करिवि को मटेरियल यूज करिवि किंतु एई फेज रे जो इंटरेक्टिव फेज रहिला बा एजुकेशन फेज रहिला सेई फेज रे ही से पिला मानकु डायरेक्टली बुझांती बा तांको सहित इंटरेक्ट करंती. दे बोथ रेस्पोंड टू स्टिमुली एज फॉर द डिमांड ऑफ द टाइम. पर्टिकुलर टाइम रे से कोन करंती से टॉपिक टा को रिप्रेजेंट करंती. दिस फेज कैन ऑकर इन क्लासरूम लैबोरेटरी लाइब्रेरीज आउटडोर एनवायरनमेंट कोउठी भी एटा कोन हे परिबो टेक्स्ट प्लेस हे परिबो. The following activities are included in the interactive phase of teaching. तो यही फेज रे कौन कौन थाए ना साइज अप टू क्लास माने से जो क्लासरूम रो साइज टा भी गोटे माने दरकार थाए. डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स मानन को डायग्नोसिस करा जाए. एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट. दिस एक्टिविटीज इंक्लूड द फॉलोइंग. फर्स्ट होची सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुली तापर आसिला प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुली फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट आउट आसिला कोन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज. तापर आसिला मेजर ऑपरेशन इन द फेज आर किए मेजर ऑपरेशन टेक्स प्लेस करती ना. फर्स्ट तो टीचर होचंदी मेन फर्स्ट कौन करती परसेप्शन करती तापर डायग्नोसिस करती तापर रेस्पॉन्स करती. देन आसिला लास्ट फेज आमर रिफ्लेक्शन जोटा कि आमर पोस्ट एक्टिव फेज. दिस स्टेप इज डन टू चेक द
to check the predefined goals and objective has been achieved or not। ता पिला माननकु पढ़े सारला परे आमे तांकोठु चेक करिबा कि सेमाने कोन जानले हमरो जो गोलटा जो एम थिला पढ़ेबार गोटे टॉपिकटा पिला मानक पाखरे पहुँचेबार बा ताको बुझेबार सेथिरे आमे सफल हेले कि नाही गोल रे पहुँच पारले कि नाही सेटा चेक करिबा होची रिफ्लेक्शन पिला मानकर रेस्पॉन्स कोन आसुची एई सब होची रिफ्लेक्शन अंडर रे जाउची। इन दिस स्टेज और फेज इवैल्यूएशन इज परफॉर्म मेनली कोन हुए इवैल्यूएट करा जाए। The evaluation can be performed by many activities such as test, quiz, observation। तो टीचर कौन करती एग्जामिनेशन करती पिला को क्वेश्चन पचारती क्विज कंपटीशन करती से टॉपिक को लेकिन जहाँ फल कि आम आमर रिजल्ट को इवैल्यूएट करूँ। दिस फेज इज ऑल्सो परफॉर्म टू चेक इफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज अचीव्ड और नॉट। विदाउट इवैल्यूएशन टीचिंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन बिना टीचिंगटा गोटे कौन इनकम्प्लीट प्रोसेस। इट इज रिलेटेड विथ बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सजेस्टेड इन द पोस्ट एक्टिव लर्निंग। तो पोस्ट एक्टिव लर्निंग रे कौन कौन सब एक्टिविटीज थाए ना डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय द टीचिंग, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स, चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म ऑफ एविडेंस एंड गैदर। आसला मोर नेक्स्ट क्वेश्चन रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे टीचर को रोल कौन। तो आम समस्ते जाचे कि गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो प्राइमरी रोल डिपेंड करे सब टीचर उपरे। जदि गोटे टीचर एक्सपीरियंस होइतिबो वेल क्वालिफाइड होइतिबो ता सहित तांको पाखर गोटे अंडरस्टैंडिंग पावर थिबो से पिला मानकु भलसे बुझेई पारुथिबे ताहेले जायकि पिला माने भल रिजल्ट करिवे। Teaching is perceived as stimulating, directing, guiding the learner and evaluating the learning outcomes of teaching। तो टीचिंग रे खाली आमे पढ़ाई देले हबनी पिला मानकर पिला मानको गाइड करबा तांकर आउटकम्स टाको आमे कोन करबा इवैल्यूएट करबा सेटा मध्य नेसेसरी। टीचर प्लेज वेरी इंपोर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे टीचर कर रोल बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखु। एटा भी गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण पढ़ी कि ना जदि टीचर विषय तो आराम से आपड़ लिखिपारे गोटे टीचर रोल कौन लर्निंग प्रोसेस रे आपन को आराम से एटा आसीजिवो तो आपन को टिके पढ़ी कि बास ओवरऑल देखि गले आपन करि परिबे। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु। Teacher is a person who teaches, control learning, dispense of knowledge, an ultimate authority and a director of learning। Teaching learning has four aspects: टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे चारिटा एक्सपेक्ट थाए। फास्ट तो टीचर रहिले, देन स्टूडेंट, देन लर्निंग प्रोसेस केमती चलुची आउ कौन लर्निंग सिचुएशन कौन। द टीचर क्रिएट द लर्निंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स थ्रू व्हिच द टीचर द लर्नर्स द करिकुलम एंड द अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर टू अटेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन ना एमती गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि टीचर लर्नर इनवॉल्व रहिबे ता सहित गोटे पर्टिकुलर करिकुलम थिबो जो करिकुलमटा कि गोटे पर्टिकुलरली वेयर ऑर्गेनाइज्ड वे रे थिबो सिस्टमेटिक मैनर रे थिबो। देन आसला रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तांकर रोल कौन आम टिके ब्रॉडली पढ़िबा। टीचर एज ए ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। तो टीचर कौन करती नॉलेज को ट्रांसमिट करती। टीचर एज ए मॉडल गोटे रोल मॉडल से गोटे स्टूडेंट पाई। टीचर एज ए फैसिलिटेटर जी कि कौन करती लर्निंग को फैसिलिटेट करती। टीचर एज ए नेगोटिएटर। टीचर एज ए को लर्नर को बेसी एम्फासिस करती। टीचर एज ए ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। फास्ट आम जानिबा is a transmitter of knowledge. The teacher plays a central role in presenting and conveying information to student. This role involves planning and organizing lesson effectively, explaining the concept, theories and facts using various teaching method, providing clear explanation and examples to help student complex ideas, using textbook, lecture, presentation and other instructional material to convey information। देन आसला टीचर एज ए मॉडल। टीचर केमिति गोटे मॉडल आकार काम कार्य करती। टीचर एज टाइपिकली हाईली रेस्पेक्टेड बाय पीपुल इन द कम्युनिटी। तो टीचर मानक आपण माने जानिथिबे समस्त केते भलो पांती केते रेस्पेक्ट करती समस्त पई से गोटे आइडियल होइथांती। देयरफॉर बिकम्स ए रोल मॉडल टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो पिला मानक पई ता सहित पिला मानकर पेरेंट्स मानक पई से गोटे रोल मॉडल होइथांती। एज ए मॉडल द टीचर सर्व्स एज एन एग्जांपल फॉर स्टूडेंट टू इमुलेट
communicate in terms of behavior, attitude and values. This role includes demonstrating positive character traits such as respect, empathy, integrity and responsibility. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମ୍ପାଥି ପାୱାର ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। मॉडेलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तांको पाखरे क्रिटिकल थिंकिंग पावर थाए, आउ कोण से समस्त कथा एक्टिवली शुणती, आउ कोण तांको पाखरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल मध्य थाए। एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर एंड प्रमोटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम नेचर। से कोण करंती ना एथिकल बिहेवियर प्रोवाइड करंती, ता सहित गोटे पॉजिटिव क्लासरूम को माने गोटे क्लासरूम रे गोटे साइलेंट मेंटेन करिया पई गोटे कोण पिला मानकू निर्देश दियंती। Displaying a growth mindset by embracing challenge and demonstrating a willingness learn. Teacher is a facilitator. A teacher is a facilitator of learning and of the development of the youth. In the role of facilitator, the teacher guides the learning process and creates an environment that promotes active participation and critical thinking. This role involves designing engaging and interactive learning experiences that encourage exploration and discovery. तो सी कौन करती टीचर सब बेले कौन करती पिला मानकू एनकरेज करती आ तांको एक्सप्लोर करवा नुआ नुआ डिस्कवर सब जिनस करने हेल्प करती। यूजिंग ए भेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी सच एज ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। पिला मानकू सबुथिरे ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, विभिन्न प्रकार सोशल एक्टिविटीज है, सबुथिरे कौन करती तांकू इन्वॉल्व रहा एनकरेज करती। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्रेस ओपिनियन, शेयर देयर आइडियाज। तो पिला मानकू कौन करती अपॉर्चुनिटी दियंती, से माने केमिति माने न डरिकी माने टीचर को क्वेश्चन करि परिबे, ए तांको निज माने ओपिनियन कौन गोटे जिनस सेटा को एक्सप्रेस करि परिबे, आउ कौन तांको आइडिया मध्य शेयर करि परिबे। ऑफरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट व्हाइल अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। आउ कौन एडप्टेशन इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट टू एनहांस लर्निंग आउटकम्स। तो सी कौन करती ना पिला मानकू इंस्ट्रक्ट दियंती, ता सहित पिला गोटे पिला कौथिरे अधिक इंटरेस्टेड से अनुसार सी करिकुलम बनाती। टीचर एज ए नेगोटिएटर द टीचर कोलैबोरेट विथ स्टूडेंट टू एस्टाब्लिश ए प्रोडक्टिव एंड इनक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो गोटे इनक्लूसिव एनवायरनमेंट माने कौन, जो एनवायरनमेंट की टीचर आउ स्टूडेंट भितर गोटे सपोर्टिव रिलेशनशिप थिबो, टीचर को गोटे स्टूडेंट गोटे कौन विदाउट एनी हेजिटेशन रे क्वेश्चन करि पारुथबो, जहाँफल कि कौन हम गोटे इफेक्टिव लर्निंग क्रिएट हो पार। दिस रोल इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन सेटिंग गोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड क्लासरूम रूल्स, फॉस्टरिंग सेंस ऑफ ओनरशिप, एड्रेसिंग इंडिविजुअल लर्निंग प्रिफरेंस एंड एडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू एकोमोडेट डाइवर्स नीड, फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ताको भितर कौन हुए गोटे म्यूचुअल गोटे टीचर और स्टूडेंट भितर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए। बैलेंसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड क्लासरूम डायनामिक टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। देन आसला टीचर एज ए को लर्नर। इन द रोल ऑफ को लर्नर द टीचर एक्टिविटी एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस alongside student, embracing a lifelong learning mindset. The role involves demonstrating humility by acknowledge that learning is a continuous journey for everyone including the teacher. Then asila kono encouraging open dialogue and sharing personal experience to enhance understanding and relevance, embracing new ideas, perspective and approach to learning from student and other source, modeling the importance of seeking knowledge, adapting to change and embracing challenge. तो ओवरऑल कहे गले टीचर को रोल ही बहुत ही इंपोर्टेंट टीचिंग प्रोसेस रे, कारण गोटे टीचर जदि माने भलो होइथिबे, अंडरस्टैंडिंग होइथिबे, आउ कोन भलो इंटरेक्टिव होइथिबे, ताहेले जाईकी गोटे कोन माने गोटे टीचिंग प्रोसेस रे भलो बेनिफिट मिल पारिबो।
ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन फंक्शन ऑफ ए टीचर इन क्लासरूम स्कूल एंड कम्युनिटी टीचर कर कौन कौन मेन फंक्शन अच्छी क्लासरूम रे है स्कूल है कम्युनिटी रे तांकर कौन कौन फंक्शन अच्छी से सब विषय में पढ़ा द मेन फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू टीच स्टूडेंट बाय इम्पार्टिंग नॉलेज नॉट जस्ट फॉलो ए करिकुलम मेन फंक्शन हूँ कौन टीचर ना पिला पर्टिकुलर नॉलेज प्रोवाइड करवा खाली करिकुलम पढ़ई देले हेनी सिलेबस जहाँ पाठ अच्छी खाली से पढ़ई देले हेनी ता सहित आम एक्सट्रा नॉलेज दबा रियल लाइफ सहित से सब सिचुएशन को आम कौन करवा इंटराक्ट करवा कि केमी रियल लाइफ रे सब घटना घटुची से सब विषय भी आम अवेयर करवा टीचर मस्ट बी एबल टू डेवलप स्किल एंड इनकलकुलेट डिजायरेबल वैल्यूज एंड एटीट्यूड एमंग पुपिल्स टीचर हैव डाइवर्स फंक्शन इन लर्नर्स लाइफ एंड ओवरऑल सोसाइटी दे एक्ट लाइक रोल मॉडल इन्फ्लुएंसर एंड नेशन बिल्डर एंड सो ऑन तो टीचर गोटे केमी काम करती ना समस्त रोल मॉडल होता इन्फ्लुएंसर होता से ही इन्फ्लुएंस करती पिलामानंकु आउ कौन नेशन बिल्डर होता द एजुकेशन इज लाइक फोर्थ पिलर फॉर नेशन बिल्डिंग एंड फॉर बेस्ट एजुकेशन टीचर्स आर इम्पोर्टेंट देन आसला फंक्शन ऑफ टीचर इन क्लासरूम रे तांकर फंक्शन कौन होता है ना द मेन फंक्शन ऑफ द टीचर इन क्लासरूम इज टू मैनेज द क्लासरूम को केमिति मैनेज करिवे पिला मानकु केमिति हैंडल करिवे काहे ना गोटे क्लासरूम रे बहुत टाइप रो पिला थांती कि बदमाश थाए कि जगला थाए कि सबले पार्टी करू थाए तो सब टाइप रो पिला को मैनेज करिया दायित्व कहार थाए गोटे टीचर कर ही थाए इन ए मैनर दैट मीट्स द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास से कौन करती सब स्टूडेंट मानकर नीड्स मध्य फुलफिल करिया को चेष्टा करती This include promoting learning and supplementing activities, coordinating, collaborating with support staff, using a variety of teaching approach and adapting instruction to include all students. तो सी कौन करती खाली सेतिकरे तांको काम सरी जाएनी ता आहुरी मध्य कौन करती ना केमिति पिलांको भल वे रे पढ़ाई पारिबे कौन इजी मेथड यूज करले पढ़ाई पारिबे से सब मध्य से ध्यान दियंती The most common role of teacher plays in the classroom is to teach knowledge to children. The effective teacher perform many functions that can be organized into three major roles. So तांकर basically तीनटा major role अच्छी first होची making effective strategies to employ, designing classroom curriculum to facilitate student learning, making effective use of classroom management techniques. तापर आसला basic function कौन ना develops and uses instructional materials suitable for student with wide range of mental, physical and emotional maturity, encourage एंड सपोर्ट द स्टूडेंट से कौन करती स्टूडेंट मान को एनकरेज करती सहित सपोर्ट करती इभालुएट एकेडमिक सोशल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट एंड कीप एप्रोप्रिएट रेकॉर्ड्स विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट एडॉप्टेड चेंजेस टीचर्स फैसिलिटेट मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज स्टूडेंट मान को कौन करती मॉनिटर करती फैसिलिटेट करती आउ कौन तांको सुपरवाइज मध्य करती provide appropriate instruction and activities for student to meet goal and objective. Then asila function of teacher in school रे तांकर कौन रोल अच्छी ना teacher play an important role in the classroom when it comes to the environment. Teacher are responsible for the social behavior learning can be impaired. Teacher play vital role in the lives of student in their classroom. गोटे स्टूडेंट क्लासरूम रे केमिति रहिबो केमिति बिहेव करिवो केमिति पढ़िबो सेटा मेनली टीचर को ऊपर ही डिपेंड करे काहे ना टीचर तांको जेमिति मॉनिटर करंती स्टूडेंट माने सेमिति ही बिहेव करंती Teachers serve many other roles in the classroom. Basic function कौन communication clearly and effective with student, parents, peers and all other stakeholders. सबू जेतिकी सारा स्कूल स्टाफ रहिले मेंबर रहिले स्टूडेंट रहिले कि पेरेंट्स माने रहिले सेमान सहित कम्युनिकेशन करंती क्लियरली आउ कौन सिलेक्ट एंड रिक्यूजेशन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेंटेन इन्वेंटरी रेकॉर्ड मेंटेन करंती कोऑपरेट इन स्कूल वाइड supervision of student during out of the classroom activities. Then asla function of a teacher in community गोटे community रे teacher कर कौन कौन function थाए ना every teacher shall provide leadership and initiative to actively participate in community movement for moral, social, educational, economic and civic betterment of the teacher in a positive school community relationship is extremely important since it is the teacher who is backbone of the educational
एजुकेशनल सिस्टम। तो आम समस्त जाने गोटे एजुकेशनल सिस्टम रो बैकबोन किए होती टीचर। तो गोटे पॉजिटिव कम्युनिटी क्रिएट करने माने पिला आउ टीचर माने पिला आउ स्कूल मध्य गोटे सुसंपर्क स्थापन करने टीचर माने कौन करती कम्युनिटी सहित भी माने कौन करती रिलेशनशिप गोटे एस्टाब्लीश करती कौन है ना पेरेंट्स को जानती। द कम्युनिटीज परसेप्शन ऑफ द टीचर एफेक्ट देयर परसेप्शन ऑफ द स्कूल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट ऑफ द स्कूल इन जनरल। द टीचर हैज टू कम्युनिटीज दुई प्रकार कम्युनिटीज थाए गोटे हूँ टीचिंग कम्युनिटी आ गोटे हूँ कम्युनिटी आउटसाइड द स्कूल। फास्ट तो हूँ जो स्कूल जो सब रहिले फेलो टीचर जो मान सहित रहा सेटा हूँ टीचिंग कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ हिज और हार फेलो टीचर्स कलीग्स एंड सुपरवाइजर। आ गोटे कम्युनिटी आउटसाइड द स्कूल माने जो मैंने बाहर रहिले includes the parents official learners local official and non-official member of society in which the school is located। एतिକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର यूनिट 4 ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ क्वेश्चन। होप कि आपण माने समस्ते बुझी पारिथिबे। जदि आपनको वीडियोटी भल लागिछि देन वीडियोटी को लाइक करिवे आपण मानकर फ्रेंड मानक सहित शेयर करदेबे और चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। नेक्स्ट क्लास रे हम यूनिट नंबर 5 टा मध्ये सारी देबु। सेति पर्यंत रहिली जय जगन्नाथ।